Assalamu alaikum students. This is your ma'am Sadia Qureshi, an assistant professor in English from Government Degree College for Women, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Today we are going to talk about how to distinguish between relevant and irrelevant information. Relevant information means that the data that can be applied to solve problems is relevant data. It means that if the data is able enough to solve all the questions that are given at the end of the story or the paragraph or the article, and you are able to solve all those problems through the data, it means that data will be relevant data, or that information will be connecting information. Next is proper determination of the format and content of statements. If you are able to determine properly about the format and the content of the statement, it means that if you understand everything that is written over there and all the content of the statement that is given in the text, it means that you are reading the relevant information and you are reading the proper kind of data. Next is information should adjust the opinions of the reader. If the information is helpful to adjust your opinions, it means that information is relevant information. Should set up a proper direction for future discussion. It means that it gives you such kind of knowledge that if you want to use it in your future life, so you have that knowledge that you can utilize in your future life, and you can talk about in a very positive way, and that sets a kind of proper kind of direction for you, so that you are able enough to argue about it in the future in a helpful way. What is irrelevant information? Irrelevant information is not related to the subject at hand. It means if you have any kind of subject at hand or in front of you, that information will not be connected to that subject. It is giving you extra information, or it is not talking about the same topic that you are discussing in the paragraph, or it might be diverting your mind from the main topic. So that information that is not related to the subject at hand is irrelevant information. Connection with the facts that are linked to basic information. Now, all that information which does not have any kind of connection of the facts that are linked to the basic information is irrelevant information. Relevant information will always be connecting the facts, and it will be linking the information with the facts. So, next point is, if something becomes irrelevant, people will stop relating to it or giving reference about it. So if there is something that is written in the paragraph but no example is given over there or no reference is given over there, it means that that information will be irrelevant information, because relevant information always comes with the examples, always comes with the instances, always comes with the supporting sentences, and it is elaborated basically in the paragraphs. It is not personal choice or judgment that is dependent upon the reader. मतलब irrelevant information, you need not to give your personal choice, or you need not to give your judgment about this information, because it is not your personal choice that you can talk about it, or you can judge about it, or you can discuss about it. Your personal choice or judgment that is dependent upon the reader is an irrelevant kind of information, because it's a subjective kind of information. It does not depend upon the reader to evaluate it or give his own ideas or feelings or emotions about it. Now there are some tips to write purposeful writing. If you want to write down something that is relevant to the topic, or it is useful for the reader to read, you need to go through some points. First of all, when you are collecting the data, go through a prepared beforehand list of the discussed points. It means that you have to discuss some points that you are going to talk about in the written material, and you have to make a list that which points you are going to mention in the written material. So if you prepare a list beforehand about all those points, it will be very helpful for you to collect the data. Next is information through different sources. Don't rely on one source. You have to go through many sources in order to get the correct information. Jotting down the information. Now you have taken the information, you have to jot down the information, you have to write that down on a paper or compose that on the computer screen, or you need to write that down on your sticky notes, so that it may be helpful for you to
collect the data and evaluate that how many points you have gone through and how many points are left. Segregation of the collected information according to the topics one wants to discuss in the text. Now, anything that you want to write down, you try to divide it into the topics. So you need to segregate that all the topics that are going to be discussed in the paragraph, you have segregated them. Now you have to collect enough information about all the topics. Sometimes it happens that you get less information about one topic and the more information about the other topic. So always concentrate on those headings or those ideas which are having less information, because आपको उसके लिए जब information चाहिए होती है तो different sources को go through करना पड़ता है, and when you go through all those different sources you come up with different kind of informations. You need to sort out कि उसमें से क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है. तो ये मेहनत तलब काम है थोड़ा सा, लेकिन ये है कि आपने इसको गौर से करना होता है कि एक टॉपिक के लिए तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई, दूसरे टॉपिक के लिए थोड़ी मिली है. जिसके लिए थोड़ी मिली है उसको कम से कम इवेलुएट करें कि जितनी थोड़ी बहुत मिली है वो सारी की सारी जो है वो रेलिवेंट है या नहीं है. तो सेग्रीगेट करना है आपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स, और फिर उसके बाद जो है वो उसको टेक्स्ट में अप्लाई भी करना है. ओमिशन ऑफ इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन. अब आपने जब सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है तो आप उसमें उसको केयरफुली रीड करेंगे एंड देन यू विल ट्राई टू ओमिट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन विच इज़ इरेलीवेंट. Prioritize what you include and where to include. We need to go through it. Before writing down anything, we need to go through in the sense that we need to prioritize it, that which topic should come in the beginning, which should come in the end, which should support the idea, which should add to into the detail, or which should be the concluding ideas, and where to include. It is very important. जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आपको ये याद रखना है कि उसको इंक्लूड कहाँ करना है. बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि इन्फॉर्मेशन हम बहुत सारी जमा कर लेते हैं और उसको सिर्फ जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन राइट प्लेस के ऊपर इंक्लूड करने से ही उसका इम्पैक्ट जो है वो अच्छा आता है. जिस तरह आप कोटेशंस याद कर लेते हैं और एसेस में समटाइम्स जो है वो कोटेशंस भर देते हैं, लेकिन वो कोटेशंस जो हैं वो पैराग्राफ्स से रिलेट नहीं कर रही होती हैं. ऊपर कोई और बात लिखी भी होती है, नीचे कोटेशन कुछ और लिखी हुई होती है. तो वो जो कोटेशन है या वो जो इन्फॉर्मेशन है जिसको आप इंक्लूड कर रहे हैं वो उसको मैच करना भी बहुत ज़रूरी है उस पैराग्राफ के साथ, उस टॉपिक के साथ या उस पॉइंट के साथ जिसको आप डिस्कस करें. मेकिंग अ रफ ड्राफ्ट. इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू हैव टू मेक अ रफ ड्राफ्ट बिफोर यू गो थ्रू द नीट वन. Making a rough draft will give you the rough idea of how far you have collected the information, how far you collected data is correct, and how you are going to prioritize your information or how you are going to make points. वो रफ ड्राफ्ट जो है वो आपको बहुत हेल्पफुल होता है जब आप किसी भी किस्म का रिसर्च पेपर या आर्टिकल या कोई भी लेटर लिखना चाह रहे होते हैं, स्टोरी लिखना चाह रहे होते हैं, कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन किसी और जगह ट्रांसमिट करना चाह रहे होते हैं. रीरीडिंग एंड रीएडजस्टमेंट ऑफ द कलेक्टेड डेटा. After making the rough draft, you are going to reread and readjust the collected data that is written in the rough draft, making a final draft. Now this is the most important thing. Most of the students don't make the rough draft, they always write down the final draft, and the final draft is full of faults. So you have to write down the rough draft in the sense that when you write down the rough draft, you go through your work once again, and when you go through your work you bring out so many mistakes and so many irrelevant points that you try to omit them, and then you try to you try to just you can say you try to make it as much proper as you can, and you reread it and you then omit, you include, you omit, you include, and then you try to give it a final shape. तो जब वो final shape आती है तो उसमें आपको बहुत सारी mistakes rough draft की निकाली भी होती हैं और आपको पता होता है कि ये information जो है वो relevant थी और ये information relevant नहीं थी. For example, there is a geographer and he wants to collect data about the climate changes. So he talks about that the paragraph will tell about that geographer will look for the data about climate changes. He will talk about the patterns of changing weather. He will talk about the temperature differences, winds, and the amount of the rainfall, and the regional distances that may affect the sea level accordingly.
तो उसको बेसिकली क्लाइमेट चेंज के बारे में डेटा चाहिए, बट उसने ये सारी चीज़ें जो है वो उनको भी गो थ्रू करना है बिकॉज वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है. तो द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कल्चर, सिविलाइजेशन एंड एथनिसिटी आर इरेलीवेंट फॉर द जोग्राफर इफ़ ही इज़ only stick to the data regarding weather change in Pakistan. यानी जो चीज़ें अगर वो इंक्लूड करता है कल्चर के हवाले से या सिविलाइजेशन या एथनिसिटी के हवाले से अपने रिटन मटेरियल के अंदर, तो वो जो है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो इरेलीवेंट हो जाएगी बिकॉज जो वो बात करना चाहता है या टॉपिक के ऊपर जो वो बात कर रहा है वो तो वेदर चेंज है, और वेदर चेंज का कल्चर से, सिविलाइजेशन से या एथनिसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. इसका ताल्लुक तो सिर्फ क्लाइमेट चेंज से है, पैटर्न्स ऑफ चेंजिंग वेदर से है, टेम्परेचर से है, या इसके डिफरेंसेस से है, या विंड से, या any kind of thing like amount of rainfall or regional distances that may affect the sea level accordingly. So it means that if he is putting all that information about the culture, civilization or ethnicity or the language barriers or the language or the codes and customs, so this all information will become irrelevant for him. Which measuring steps you can take to write down a proper kind of paragraph regarding any kind of information which is relevant to the topic. Now you have to identify the main topic of the material. यानी आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप जो टॉपिक यूज़ कर रहे हैं मटेरियल के लिए वो क्या है. फिर उसके बाद आपको हेल्प मिल सकती है कि अब आप आइडेंटिफाई करें कि इस टॉपिक में मैंने क्या इंक्लूड करना है, क्या डिस्क्लूड करना है, और उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन लिस्ट तैयार होगी कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन करनी है. नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई विच सपोर्टिंग आइडियाज़ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू टॉपिक. Then identify the ideas that are not directly related to that main topic. Then we have to sort the information that is directly related to the topic. Try to evaluate again and again by giving reasons to yourself. ये point मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है because you have to go through your rough draft. When you go through your rough draft, you find mistakes. Sometimes you think that there is less information which is given about the topic and I have to include more information. Sometimes it happens कि आपने एक टॉपिक के बारे में 4-5 पैराग्राफ लिख दिए हैं और वो 4-5 पैराग्राफ रिपीटेड पैराग्राफ्स हैं, तो उसमें से आप कोशिश करते हैं कि आप रेपिटिशन को ओमिट करें और उसको कम से कम जो है वो पैराग्राफ्स के अंदर उसको कंप्राइज करने की कोशिश करें. तो इस तरह जब आप बार बार अपना रफ़ ड्राफ्ट को पढ़ते हैं तो उसमें से मिस्टेक्स निकलती हैं और उसके बाद आप ऑब्वियसली एक अच्छा फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के काबिल हो जाते हैं. और ये जो बात लिखी है कि ट्राई टू इवेलुएट अगैन एंड अगैन बाय गिविंग रीजंस टू योरसेल्फ, दिस इज़ रिटन बाय मी बिकॉज आई वांट यू टू इवेलुएट दैट जो अंडरस्टैंडिंग आपने ली या जो आपने इवेलुएट किया टॉपिक को, क्या जो इन्फॉर्मेशन आप पुट इन कर रहे हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रीज़नेबल है और आप सेटिस्फाइड हैं कि आप जो रीज़न उसको देते हैं या जो आप इवेलुएशन पुट इन कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन पुट इन कर रहे हैं वो रीज़न्स के साथ आप पुट इन कर रहे हैं कि आपने उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया है. क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है उस वक्त जब आप अपना रिसर्च थीसिस जो है वो डिफेंड करने के लिए अपने एक्सटर्नल्स के पास जाते हैं. तो वो आपसे पूछते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखी है इसकी क्या रीज़न है. वो आपसे जब क्वेश्चंस करते हैं तो चूंकि आप एक दफ़ा ऑलरेडी अपने आप को रीज़निंग दे चुके होते हैं या जो भी आपने इन्फॉर्मेशन पुट इन की होती है उसकी रीज़निंग आपने ख़ुद को दे दी होती है, तो उसके बाद आपको एक्सटर्नल को सेटिस्फाई करना या किसी भी ऐसे इंसान को सेटिस्फाई करना जो कि आपके रिटन मटीरियल या टेक्स्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चन करेगा आसान हो जाता है. डू नॉट फोर्स द कनेक्शंस. दिस पॉइंट इज़ वेरी मच रेलिवेंट टू द टॉपिक कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम इधर उधर की बात को फोर्स करते हैं और कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने मेन टॉपिक से. अगर वो बात रीज़नेबली कनेक्ट हो रही है दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड, बट इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट कनेक्टेड और वो बहुत कहीं फार फेच्ड है और बहुत ही थोड़ा सा उसका कनेक्शन बन रहा है, तो फोर्स ना करें उस टॉपिक को कि आप अपने टॉपिक अपने मटेरियल के अंदर उसको इंक्लूड करें. हाँ, अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं यू कैन इंक्लूड इट इन 1, 2 और 3 पॉइंट्स, लेकिन आप उसको पूरी इंफॉर्मेशन को पुट इन ना करें. ट्राई टू give a reasonable kind of material so that आप उसको justify करने के भी काबिल हो सकें. How can we do all this? ये बहुत important बात है. We have to read carefully. जब भी कोई टेक्स्ट हमें मिलता है तो हमने उसको केयरफुली रीड करना है. We have to highlight the relevant information और underline the irrelevant information. यानी जब आपने कोई टेक्स्ट पढ़ना है,
चाहे हमने डिफरेंट सोर्सेज को कनेक्ट करना है, डिफरेंट सोर्सेज को हमने गो थ्रू करना है, तो डिफरेंट सोर्सेज के अंदर हर बात तो हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं करती होगी। तो हमने जब उसको रिलेट करना है तो वी नीड टू सी कि क्या चीज़ डायरेक्टली रिलेट हो रही है या क्या चीज़ एक्स्ट्रा है। आप कर सकते हैं कि एक हाइलाइटर अपने हाथ में ले लें और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको किसी भी किताब में से मिलती है जो आपके टॉपिक से रिलेट करती है, आप उसको हाईलाइट कर दें, बाकी इंफॉर्मेशन को छोड़ दें। Now this highlighting will be a proof that you have read the text carefully and understood it to the core। यानी वो highlight जो आप करेंगे डिफरेंट बुक्स के अंदर से मटेरियल लेके या हैंड आउट्स के अंदर से मटेरियल लेके या गूगल के अंदर से अगर आप मटेरियल लेते हैं और आप प्रिंटेड फॉर्म में उसको रीड करते हैं, तो वो जो हाईलाइट किया हुआ फॉर्म होगा वो बताएगी कि इस बच्चे ने जो है वो इसको टेक्स्ट को केयरफुली रीड किया है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन को जो है वो मार्क कर लें कि ये वाली टीचर से आपने बात पूछनी है या ये वाली डायरेक्टली रिलेट होती है पॉइंट, या ये पॉइंट जो है वो इनडायरेक्टली रिलेट हो रहा है लेकिन मेरे पास रीज़न है कि मैं इसको शामिल कर सकूं, तो वहाँ पे आप मार्किंग कर सकते हैं कि डायरेक्टली रिलेट हो रहा है या इनडायरेक्टली रिलेट हो रहा है या फिर डिस्कस करने वाला पॉइंट है। तो इस तरह से एक प्रूफ सा आ जाता है आपके पास कि आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसको आपने रियली अंडरस्टैंड भी किया है। Now you have to start practice by solving exercises that are given there in the book, or you can take any kind of paragraph through which you can decide कि इसमें relevant information क्या है और irrelevant information क्या है। तो इस तरीके से you can go through all this and then you will be able to find out that what is the distinction between how to distinguish between relevant and irrelevant information. So this is it for today, and your course is going to be finished, so we are going to meet in the classes from 1st of February, and Allah Hafiz.